सर को कृपया मैं यहाँ मंच पर बुलाती हूँ। सर प्लीज। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट का जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सईद नासिरुद्दीन सर को भी मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहती हूँ। इस ब्रांच में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, ये आप लोग का बदौलत है। आप लोग यहाँ पर आए और इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए। सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दार्जिलिंग ब्रांच की तरफ से सर सम्मान कर रहे हैं सर। वेलकम सर। रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी सर को भी हम लोग टोपी से सम्मान कर रहे हैं और शॉल से भी सम्मान जना रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है सर। और ये फूलों के मालों भी, फूलों की एक माला मैडम लोग को भी हम लोग दार्जिलिंग ब्रांच के मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। और आप
allow me to speak something about this program, about this Red Cross Society in Darjeeling, which is actually from the very beginning. I wanted to come all the district branch and do something for changing the situation. I tried my best and I came. It is my second time to your place, and when I came here, I thought something would be changed, and what change is going on, I have seen to all of you. You are now your fresh, your dedication and your involvement encouraging me, and since the new setup has come up in your Red Cross Society Darjeeling, I think more change you will be seeing very shortly. So I do welcome Sriti, who became the secretary, who is really a dedicated person, and her interest and her dedication actually moved me. So I wanted her to take more care, more responsibility for their district, which is required. There are so many problems we have discussed with Sriti, and we are trying to solve it, sort it out, how it can be done. As long as I am the chairman of West Bengal Red Cross Society, and now I am the board member of all National Red Cross Society in India. So I have some responsibility and some possibility to do something for all our West Bengal district branches. So bless me, support me, cooperate me, so that I can fulfill my dream to make changes for the people, changes for the society, having Red Cross Society. Thank you very much at the moment. And I must mention that this type of arrangement was not necessary really. We are very simple man. I want to be simple. I want to be one of you. In Bengali, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক। আমাকে আপনারা দূরে সরিয়ে রাখবেন না, এই চেয়ারে বসাবেন না, আমাকে বসতে বলবেন আপনাদের সঙ্গে, আমাকে কাজ করতে বলবেন আপনাদের সঙ্গে। আমি এটাই অভ্যস্ত। আর যখন আমি হাইরার্কিতে উঠে যাব বড় চেয়ারে, তখন আমি সব কিছু ভুলে যাব। সুতরাং আমাকে ভুলতে দেবেন না, আমাকে আপনার মতো, আপনাদের মতো করে রাখবেন। That would be my most privilege and respect for me. Thank you very much. नमस्कार सर, आज जो आप यहाँ पे दार्जिलिंग पे आए उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्या? दार्जिलिंग में जो आपका भ्रमण है उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। No, it's my completely not as we have come here not as tourists.
but I come here as the chairman of Indian Red Cross Society to attend and discuss about the future and our जो कार्यक्रम है वो अभी का जो सेक्रेटरी है उनको साथ बात करना है. Then we can see what we can do from our headquarters. And actually, I personally want to do something for all the district. Darjeeling is one of them. So that do is means for the people in distress, and to highlight the Red Cross symbol to the people. Because Red Cross Society is such, which is dedicated for the people in emergency, in distress, and whenever they are in need. So I want to motivate all of my friends and colleagues here and tell them how to start this type of job, and that would be a great challenge. And as media people, I would expect that you kindly respect them, you kindly highlight them, and what they want to do, you guide them. My background is journalism. I actually passed in MA in journalism 1978. So from that very beginning, I am trying to do something. And as journalist, I know how to highlight and how to reduce. So I would request all of you as a journalist, do something for your district, do something for your Red Cross Society, so that all together we can really bring a new era of Indian Red Cross Society Darjeeling District Branch. Thank you. तो आप जो आप बता रहे थे, जो आज के ये कार्यक्रम में आप यहाँ के मेंबर से भी आप लोग मुलाकात करेंगे और फ्यूचर के लिए कुछ करें, तो आपकी तरफ से जो आप यहाँ सोच के आए कि दार्जिलिंग में ये करना चाहिए, तो ऐसा क्या कोई प्लानिंग है जो आप यहाँ पे करना चाहते हैं? First of all our branch, not only Darjeeling, we are trying to self-support. Darjeeling Red Cross should stand on their own feet, because we are everywhere facing a big financial problem. We have to mobilize the local resources. How to do that one, I have to discuss with them, and they can utilize the local resources, as well as they can raise funds from the awareness campaign. They can raise funds from making more and more live membership, so that people can be involved with their small contribution. And on that basis, I and our Secretary Sahab has come, who will be discussing with them, and we will fix up the next agenda, next program. नमस्कार, म दार्जिलिङ रेड क्रस सोसाइटीको नयाँ जेनरल सेक्रेटरी र आज हाम्रो यहाँ दार्जिलिङ रेड क्रस सोसाइटीमा चाहिँ एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट भइरहेको छ, जहाँ हाम्रो रेड क्रस चेयरम्यान, स्टेट रेड क्रस चेयरम्यान र जेनरल सेक्रेटरी स्टेट दुईजना हाम्रो आज मञ्चमा आएर हामीलाई यहाँनिर उहाँहरूले एउटा सौभाग्य पुर्याउनु भएको छ, र त्यसले गर्दा हामी एकदमै खुसी छौँ र रेड क्रसलाई हामी अगाडि बढाउनु कसरी, यो फ्युचर प्लान कस्तो हुनेछ र उहाँसँग बसेर हामी यहाँनिर रेड क्रसको कतिवटा प्रब्लमहरू छ र कसरी हामी सल्भ गर्ने हो, यो एउटा फ्युचर प्लान चकआउट गर्नुको लागि पनि उहाँहरूको आज यो अफिसियल भिजिट हो। र उहाँहरू आज दार्जिलिङ र आज र भोलि दार्जिलिङ र पर्सि 22 र 23 तारिक मिरिकको टुरमा हुनेछ, र मिरिक सिलिगुडी र खरसाङमा पनि हाम्रो सब डिभिजन्सहरू छ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सब डिभिजन, 3टा सब डिभिजन लिएर चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले चाहिँ कसरी रेड क्रस र सोसाइटीलाई अगाडि बढाउन सक्छ, यो फ्युचर प्लानको निम्तिको लागि चाहिँ उहाँहरू आज आउनुभएको। तपाईहरुको पक्षबाट के सोच्नु भएको छ फ्युचर प्लानिङ? हजुर, फ्युचर प्लानिङको त अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो त अब हाम्रो यो बिल्डिङको मेन्टेनेन्सहरू भयो र ब्लड डोनेसन क्याम्प त हामी गर्दैछौँ, र अहिले हामी चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा सानो इन्टरनल प्रब्लम भइरहेको छ, जुन चाहिँ अब समय आयो भने हामी मिडियालाई भन्नेछौँ, र त्यो सानो इन्टरनल प्रब्लम लिएर चाहिँ अब हामी अलिकति त्यो तर्क वितर्क पनि हाम्रो जारी नै रहनेछ। हजुर।